Hello everyone. How are you? Wow, I'm so happy to see you all after so long. Hi everyone. Welcome to our meditative mandala session. I am also absolutely fine and so excited to do this mandala session. बहुत खुश हूँ मैं ये मंडला सेशन करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ. देखते हैं क्या होता है हमारे साथ. सब कोई ग्रिड बना के तैयार हो. I'm also very happy to see all of you. चलो हम अपनी टैग लाइन से शुरू करते हैं. Hello, Namaste. How are you all today? I am very fine and I want all of you to write in comment how are you feeling. आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो वो मैं जानना चाहती हूँ. तो कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो. आप खुश हो? आर यू हैप्पी? आर यू स्ट्रेस? आर यू फीलिंग लिटिल बिट एंक्सियस और आर यू एंजॉइंग? Whatever your energy is right now, whatever energy level is, please let me know through your comment. मैं बहुत खुश हूँ लेकिन थोड़ा सा एंक्सियस फील कर रही हूँ. सो दिस इज माई एनर्जी लेवल राइट नाउ. वेरी हाई एनर्जी बिकॉज आई एम सो हैप्पी आई एम डूइंग मंडला सेशन विथ ऑल ऑफ यू, बट लिटल बिट एंक्सियस because this is the first time I am doing mandala session on live on our main Facebook page. So I have a mixed feeling. So I want to know how are you all feeling. आप सब कैसा महसूस कर रहे हो वो मैं जानना चाहती हूँ. कमेंट के ज़रिए बताओ. अगर कुछ फेवर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर दिस लाइव सेशन विथ मैक्सिमम पीपल. ओके, सो मैक्सिमम पीपल विल बी बेनिफिटेड विथ दिस. हो सके तो आप ये हमारा लाइव सेशन सबके साथ शेयर करो तो सबको हेल्पफुल रहेगा. चलिए, वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम. So let's start our mandala session. Mandala is very meditative process. I personally enjoy whenever I want to relax and I want to feel like in a meditative state. तो मुझे जब भी ऐसा कुछ होता है कि दिमाग में बहुत सारे विचार है, so much jumble up thoughts and I could not figure out, I could not put my energy somewhere else, then I sit down and I just start doing my mandala, whatever come into my mind. You can share, you can see the tab share and then from there you can share this. Okay, you will see that tab share. Just click on it and you can share on your main profile, whatever group you are part of, you can share there. Okay, so for me mandala is very meditative. Let's start our mandala. I will draw few things with pen and then few things with my felt pen. Okay, I have 5 felt pen, different size. Let's see which one we can use. And don't worry if you don't have all these things. If you have normal ball pen, that is also perfectly all right. Okay, just enjoy the process. Okay, for mandala, this center section is always very challenging. Okay, everyone feel that it's very tiny what to create. So for this section you can do symbol. Okay, आप कोई भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर. So that's the beauty. Mandala you can do so many different things.
So if you want to write Om, if you want to write your any religious symbol, swastika, lotus, flower, whatever you want to do, you can do in a center. Okay, so we will start from here. Okay, we will start from this part, and I will do some line work in center. Then we will progress in one small section. मैं यहाँ से शुरू करके एक स्मॉल सेक्शन में प्रोग्रेस करूँगी, क्योंकि पूरा मंडला करने में बहुत टाइम जाता है और मैं आप सबका इतना सारा टाइम नहीं वेस्ट कर सकती. करेक्ट? ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई 01 size felt pen and I will draw my line first. So if you are drawing with me, start drawing line. And see, when I am talking, I am excited, I am in so much energy level, my circle is not perfect. So nothing to worry about. We don't have to prove anything to anyone. We are just enjoying our mandala. Okay, and the beauty of mandala, you can rotate your paper, right? In Mehndi we usually don't rotate our paper, but in mandala you can do that. Now here I will give very small flower. सेंटर में आपको जो करना है वो कर सकते हो. मैं यहाँ पर बहुत छोटा सा एक फ्लावर बनाऊंगी. And just enjoy this entire process. Okay, be very kind to yourself, and when you complete your mandala, whenever you complete your mandala, you can share with us on our Facebook page. Can you see this tiny grid? Let me zoom little bit so it can help you. Okay, so what I am doing here is I am trying to draw leaf like shape. Is it okay? Can you see what I have done? I drew leaf like this using my tiny grid in center. तो सेंटर की हमारी बहुत पतली पतली लाइन है, उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने सिर्फ ये लीफ ड्रॉ किए हैं. In any design, contrast is very important. Okay, remember to look design beautiful, contrast is very important. So our aim here will remain the same like in मेहंदी. मेहंदी में भी हम क्या करते हैं, contrast create करते हैं. तो यहाँ पर भी हम contrast करेंगे. कैसे? हमारे फिलर से, अंदर जो हम फिल करते हैं उससे, whatever filler we will use inside, with that we will create contrast. Now whatever unnecessary lines you can erase. If you have color pen, you can use various colors. The center of mandala is like a seed. It's like originating the life process, that the seed that is important for any life.
So see what I'm doing. Fill this area. So that way we have created our contrast. Very important thing for mandala, there are very few elements that we can use on repetitive mode. Let me show you those elements also, so it will be easier for you. So in mandala, if you are beginner, आप शुरुआत कर रहे हो, तो जैसे ये हमारा मेहंदी का एलिमेंट है, मंडला में भी हम ये इस्तेमाल करते हैं, हम्प्स, फ्रिल्स. Oh, sorry, I was out of camera. Let me zoom out. Okay, so these are few basic element you can use in mandala. Okay, then there are few shapes you can use, like big round U petals, then this kind of leaf shapes. So these are basic shapes we use with mandala. Then whatever we fill inside, it's up to you, your creativity. Either you can use from Zentangle art or floral art or mehndi art, whatever you want to do. Okay, so as I said, I will complete only one section, 1/4 of the section, and then the rest of the part I will complete later on. Okay, so now we will use our frill on top of this. See what I am doing. Whenever you do mandala, you can put some relaxing music, you can put some nice motivating videos, anything, music, soothing music, the music you love, and enjoy. Go into trance. With each and every curve, enjoy the process. The way your pen move, some new element come up. Isn't it so beautiful when you are creating something? Remember to follow grid, okay? Because it's very easy to go out of grid and go haywire. In mandala, that is the biggest challenge. Then we will do our big petals, U petals. Okay, inside we will draw very simple line and dot. I, alphabet I.
Now you see what I am doing. If you are not comfortable directly with pen, then use pencil. I am again drawing leaf shape. अगर आप डायरेक्टली नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो पेन से, तो पेंसिल का सहारा लो. गलती अगर हो भी जाती है तो आप आसानी से उसको मिटा सकते हो. इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, यू कैन इजीली इरेज दैम. And let's prepare entire structure first. Then we will fill all inside filler element. हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद जाके हम अंदर जो फिल करना है फिलर एलिमेंट वो करेंगे, ताकि थोड़ा सा हम एंजॉय कर पाए. एक बार उसका स्ट्रक्चर तैयार है, मंडला बहुत आसान है. Once you have structure prepared, mandala is very easy. See, my grid is here. I drew line inside, and now my line is on my grid. So I am following my grid religiously. Then I need some border element. Border elements are also very integral part of mandala. So whenever you want to break those design, you can add borders. So whenever you are layering up all the patterns and suddenly you need to break those pattern, you can use this type of borders. And borders are very, very easy to decorate. So whenever you are confused also, you can use such border elements. Okay. Now again we are going to use this kind of leaf for our pattern. मंडला में सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है? You know what is the most challenging part in mandala is which pattern to do as a layer. एक के ऊपर एक किस पैटर्न को करना है, वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है मंडला में. So एक बार आपने वो स्ट्रक्चर बना दिया, then it is very easy. And that's what we are doing here. We are preparing our structure first. Now we will give some round petals.
if you like coloring, then you can use this structure and just color them. So you can use this as a coloring page. You can use acrylic color, you can use gouache, you can use watercolor. Any water-based color is fine. For mandala, any water-based color is fine. You can use acrylic paper, you can use watercolor paper if you want to use those paint. So with mandala there are so many varieties, and nowadays the dot mandala is also very popular, right? Let's do some more layering. For that I need some double line. Now we are creating some pattern here. So whenever things go a little bit complicated, use pencil, sorry. Okay, so what I did here, I made one flower here, then I made swirls here, then I made one small leaf, give some layer to those leaves, then remember where you have to go. Okay, you have to use this grid. Okay, this pattern is little bit complicated, but go slowly. Okay, I will go one more time so you will understand. One circle here, flower is here, then there is a center line going on. From that center line we are creating swirl. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर लाइन है, वहाँ से हमने ये स्वर्ल को लिया, और अब ये जो सर्कल ग्रिड है वहाँ पर हमने इस छोटे से फ्लावर को लिया। जिसके ऊपर हमने 3 लेयर लिए, वी गिव 3 more layer to it, then
circular line, like curve line to the sides, and then leaf shape. This is how we build up this pattern. Okay, one more time. This is what very intimidating in मंडला. मंडला में यही बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है कि वो ग्रिड को फॉलो करके आप पैटर्न ड्रॉ करते हो. अगर ग्रिड को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी पैटर्न हर जगह पे फैल जाएगी. See, first time it was challenging. Now once you get the grip, it's easy. So how is so far? यहाँ तक कैसा है माहौल? बता दीजिए हमें. यहाँ तक का माहौल ठीक ठाक, सब सही सलामत. चलिए हम पेन से ड्रॉ कर देते हैं इसको. सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी वाला कुछ चीज़ लगता है मंडला में, तो ये स्वर्ल गलतियाँ करवा देते हैं. स्वर्ल मेक यू क्रिएट मिस्टेक. दे आर वेरी चैलेंजिंग. थैंक यू रजनी जी. क्या है, हमारे सारे स्टूडेंट ही ऑनलाइन हैं. सब ड्रॉ कर रहे हो मेरे साथ, सिर्फ एंजॉय कर रहे हो. मंडला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से लाइव करूँगी, क्योंकि मेरे लिए मंडला बहुत ही कंसंट्रेशन वाली चीज़ है. मैं जब भी मंडला करती हूँ इतना फोकस के साथ करती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से उसका लाइव करूँगी. लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार से बोला तो मैं मना कैसे करती. ओ यास्मीन जी भी आ गई. यास्मीन डजंट लाइक मंडला. उसको मंडला देख के चक्कर आते हैं. गुड मॉर्निंग यास्मीन. किन लोगों ने अभी तक कभी भी एक भी बार मंडला ड्रॉ नहीं किया है? हाँ, आई सॉ यू. How many of you have never ever tried mandala in your life? Oh, Yasmin, I knew it. You are going to be the one. Oh, Mansi also. Ji Mona, I will definitely post this video, but it will be posted on YouTube. Easier that way for me. So if you like to do experiment, you can fill acrylic paint in a cone, and you can do mandala with acrylic paint. Okay, that is also very good practice. Very good if you want to practice your mehndi also. So yeah, that is going to be excellent practice. Just fill your cone with acrylic paint and practice your mandala.
So it's like practicing two things together, correct? चलो हम आगे बढ़े, एक और इसके ऊपर आउटलाइन दे देते हैं. Let me give one more outline. Hi Nada, thank you very much dear. So if you can see, I keep changing my pen. So this thick line I drew with 08. Okay, I'm using 08. Usually I use 08 for dark part, but today somehow it is in my hand, so I'm using 08. And then for fine lines I'm using 01. Okay, so right now I'm using 01. So keep experimenting with your pen also, so that will also give you contrast. These are felt pen. Yeah, these are felt pen, ultra fine markers, felt pen. In India you can find Pigma from Sakura. Then you can find Bustro from Bustro Officials. So yeah, those are few brands. If you go to Amazon, it's easily available. Trust me, very easily available and very cheap. Because recently I got my Bustro fine line pens from India. So yeah, if you go to Amazon and type felt marker pen, आप अमेज़ोन पे जाइए, फेल्ट मार्को मैं क्या बोल रही हूँ फेल्ट मार्कर पेन सर्च कीजिए, बस्ट्रो की मिल जाएगी, पिग्मा की मिल जाएगी और बहुत बहुत इजीली मिल जाएगी. ट्रस्ट मी ऑन दैट. ओके, सो पूरा ऐसे सेट भी आता है. लाइक आई हैव दिस स्मॉल सेट. इट हैज़ अ बेसिक 5 पेन्स. देखो ये 005 पॉइंट है. दिस इज 005, दिस इज 03, दिस इज 05, दिस इज 08 and this is 01. Okay, so this kind of sets, basic sets are available very easily. Okay, let me use 05. 05 is the most useful pen, at least for me. I use 05 a lot, and that's why my 05 is always finish up faster than any other pen. Okay, so okay, let's get back to our structure. So here, if you can see, I am using little bit curve line connecting these two petals. Hello Rahul ji, how are you? बहुत दिनों के बाद दिखे हो आप. See, so I am using this curve line. It's not straight line, it's little bit curve. Then I will give one more parallel line to it, but inside. मैं उसके अंदर एक और पैरेलल लाइन दूंगी, अंदर की ओर. ठीक है. ओके, सो नाउ उसके ऊपर हम एक और बॉर्डर्स डाल सकते हैं. डू वी हैव स्पेस? या हमारे पास जगह है, तो हम एक और बॉर्डर इसके ऊपर डाल देंगे. बट दिस टाइम वी विल हैव कर्व लाइन. सो सी, माई लाइन्स आर गोइंग वेरी मच सिमिलर. बहुत सिमिलर ग्रिड के ऊपर फॉलो कर रही है, कि यहाँ पर ग्रिड को टच कर रही है ऊपर. इफ़ यू कैन सी, इट इज़ टचिंग हियर, इट इज़ लिटिल बिट डाउन फ्रॉम हियर. सो अगेन इट विल कम लिटिल बिट डाउन हियर. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर टच कर रहा है, तो एग्जैक्ट फॉलो दैट. व्हेन यू आर यूजिंग ग्रिड यू कैन डू दैट. हम तो बढ़िया है राहुल जी, आप कैसे हो बता दीजिए. दिखते नहीं हो आप, गायब रहते हो.
और पैरेलल लाइन. Okay. Then on top of it we can create, what should we create? I'm asking you, all of you, क्या करना चाहिए हमें? चलिए कुछ करते हैं. See, I drew this. Now this is going to be challenging. हाँ, अच्छा जी, हम नहीं दिखते हैं, हम तो आते रहते हैं. Okay, this is little bit challenging, so draw very carefully. Okay. So if you cannot draw this, then use something else, some other element. Okay. Then on top of it, we will draw leaf shape in center. Actually, whenever I use pencil, I don't use this dark. This is wrong. जब भी मैं पेंसिल का काम करती हूँ, मैं इतना डार्क नहीं करती क्योंकि इरेज होने में फिर प्रॉब्लम होता है. बट you can see clearly, that's why I'm doing that. Okay, so that was wrong. It's supposed to be here. See, I have various type of eraser also. Let me show you. मेरे पास different kind of eraser भी है. ये बहुत पतला वाला मोनो ज़ीरो इरेज़र है और ये ऐसे ही है, उसका नाम नहीं है कुछ. बट दिस आर वेरी इजीली अवेलेबल. ओके, चलो अब हम पूरा फिलर एलिमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं. We will go simple here. Then fill this area. We are creating contrast, right? हम contrast बना रहे हैं. So fill this area completely. See, we have used very simple shapes. Now how you fill those shapes, that makes difference. Otherwise, if you see all mandala look same, like pattern wise, like element wise, then whatever filler element have been used, those are different. हम मंडला जब भी देखते हैं तो उसमें किस तरह से फिलर एलिमेंट डाले गए ना, उससे पूरा फर्क आता है. Let's use the finest one. Now this side we will add some line.
Okay. Simple lines and bold fill. Great contrast. Keep your lines neat and clean. So far so good. Then some triangular pattern here with same fine lines. Remember we have grid line here, so we are following that as a center. हमारे पास ग्रिड की लाइन है तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हम कुछ बॉर्डर एलिमेंट लेंगे. वो भी बहुत सिंपल वाली. पुट क्रॉस इन बिटवीन ग्रिड. ग्रिड के बीच में इस तरह से हम क्रॉस डाल रहे हैं. अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आप रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो. If you are looking for perfection, then use rulers. Then you can erase those grid lines. Then I will put some dots. ओके. अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं. See, I am creating lines that is touching in this grid. So this line start from this grid and go here. Got it? अब यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी कर्व में हम लाइन बना रहे हैं. ओके. Just follow the shape of this leaf and make lines. Very simple, but it will look very beautiful.
Actually, these are mandalas are very good way to practice your filler elements also. Funny thing, I have never done mandala like this. Okay, this is the first time I'm doing mandala like this. मैंने इस तरह से मंडला कभी नहीं किया है. फर्स्ट टाइम इस तरह से मंडला कर रही हूँ. ओके, अब इसको हम भर देते हैं. So one more line here, then fill this part. ओके, अब यहाँ पर ओके, यहाँ पे भी मैं कर ही देती हूँ. लेट मी फिनिश दिस पार्ट ऑल्सो. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग करते हैं. I want this leaf little bit bold, so I will darken this sides. Okay, so now this area we will use flower 1 2, then 1 2 and 3 petals like this. Okay, अब यहाँ पर हम उल्टा करेंगे. ओके, दिस साइड वी विल गो अपोजिट डायरेक्शन. वन टू and 3. So understand what I did. This flower is facing downward and this flower is going on top. Then the surrounding will be dark. Same here. Hi dear, hi Shirin, how are you? One more time. I will show you what I did. So this side, circle, circle, then petals. Here in opposite direction. So go one by one, otherwise you will end up doing mistake. Again here. Inside we can use fine liner and decorate. This is not fine liner. Either we can use line and dot, and center we have enough space, so we can give 2-3 layers. Okay, same here. यहाँ पर भी हम सेम करेंगे. सेंटर में जगह है तो पेटल बना देते हैं. साइड पे आई.
सबसे बड़ी जो पेन हो उसका इस्तेमाल करो ये बोल्ड वाला पार्ट फिल करने के लिए, सो इट इज़ फास्टर। When you are starting something you are not comfortable, always go with simple designs. जब आप शुरुआत करते हो कंफर्टेबल नहीं हो तो सिंपल डिज़ाइन से ही शुरुआत करो। धीरे धीरे करके स्किल बिल्डअप होती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ से कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी हमने पेंसिल का काम किया था वो हम इरेज कर देते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इससे। मैं यहाँ पर कुछ लाइन इस तरह से साइड में ऐड कर रही हूँ। जितनी जगह हो जितनी लाइन आप ऐड कर सको, कोई ऐसा रूल नहीं है। मुझे ये जो सेंटर में मैंने स्वर बनाए थोड़े से डार्क चाहिए, तो मैं वापस उसको डार्क पेन से मोटा कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। सीरीन स्टार्टिंग का मिस हो गया तो मैं ये यूट्यूब पे डाल दूँगी वीडियो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर रहे हैं ताकि वो सेंटर में दिखे। ओके, यू कैन रिविजिट योर डिज़ाइन एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। आप जितना अपनी डिज़ाइन को रिविजिट करना चाहो कर सकते हो। जितना डिटेल उसके अंदर डालना है आप डाल सकते हो। सब टू यू, योर स्ट्रेंथ। जितना डिटेल डालोगे उतना इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैं इस तरह से इसमें पेटल कर रही हूँ, इस साइड भी इस साइड भी, दोनों साइड पे। और फिर बीच में उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं।
तो साइड में खाली जगह बचती है, वहाँ पर हम थोड़ा सा उसको डार्क कर देते हैं इस तरह से। वन मोर टाइम। petal like this, both sides, and center we will keep like this only, the triangle, and sides we will make them bold little bit, whatever empty space we have. Okay, chalo, some more detailing. यहाँ पर we can create lines like this. See how I drew line. See carefully. हाँ, one more time I am showing here. एक बार मैं वापस यहाँ पर बता देती हूँ। ये जो लाइन है complete. Okay. Then again this line complete. So you have to follow first this line, then this line, then this line. Then only you will get this pattern. See carefully this pattern. How did we obtain? हमने किस तरह से बनाई है? First this line, then right side line, then center line, then again left side line, सीरीन ये हाथ के ऊपर नहीं है, ये मंडला बना रहे हैं, ये डेकोरेटिव चीज़ है, आप अपने घर में सजाने के लिए भी रख सकते हो। आप इसको फ्रेम करवा के अपने घर में सजा सकते हो। आप कलरिंग पेन से बना सकते हो, एक्रेलिक पेंट से बना सकते हो, जो मर्जी चाहे उससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। ये हाथ पे नहीं हम बनाएंगे, ये इसी तरह पेपर पे बनाएंगे, कैनवास पे बनाएंगे, MDF बोर्ड पे आप बना सकते हो, जहाँ चाहो, लेकिन घर में आप डेकोरेट करके बना सकते हो। ये डेकोरेशन का पीस आएगा, या तो फिर आप सिर्फ अपने आप टाइम पास करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, लोग मेडिटेशन के लिए भी मंडला करते हैं। पीपल डू मंडला जस्ट टू मेडिटेट बिकॉज इट्स अ वेरी थेराप्यूटिकल प्रोसेस. So this thing
you can create in Mehndi. I'm not saying you can't, but mandalas are different from Mehndi. You can create this kind of design in Mehndi, but mandala has its own purpose. Now we will do some borders here. Exactly. There are so many things you can do with mandala. आप रंगोली से भी कर लो, या तो ऐसे पेपर पे कलरफुल बना के आप रंगोली की तरह भी कर लो. Okay, now some more lines we are adding here, but in alternate boxes. Mandala doodles are very popular art forms. Zentangle, Zen art. And nowadays we are using all these elements in Mehndi also. And that's why Mehndi is becoming challenging day by day, because it's getting fusion by so many different art forms. Dot mandalas are also very popular nowadays. So if you feel like practicing Mehndi but you don't have Mehndi, or if you don't want to use Mehndi, use acrylic paint in a cone. Good quality acrylic paint, heavy body acrylic paint you are supposed to use here. Okay, don't use art and craft quality, because it won't give you that effective result. So use art and craft quality acrylic paint and decorate. You can decorate this way candles. You can decorate that tea light candles, then center candles. And nowadays people are actually selling those things as art. Here we can just add dots easier. So with this art form you can actually explore more and explore your creativity more. And same way, if you find something like you don't want to do Mehndi but you like Mehndi, then you can create some other different art using that, and you can establish yourself with artists. There are so many artists who are mandala specialists. They create mandalas and they sell mandala art. There are artists, they do decorate candles and they sell candles. Some artists create only canvases using acrylic paint and they sell those canvases. So do that. It's really good if you explore more this kind of art. The basic will remain same. Okay, so we use biggest pen here, and now with fine line we are giving some contrast here. जब आप एक्रिलिक पेंट यूज़ करते हो ना, तो सीलर के तौर पे आप एक्रिलिक सिलान जो वर्निश आता है ना, वो इस्तेमाल करो उसको सील करने के लिए. चलो अब फाइनल स्टेज पे हम यहाँ पर क्या करेंगे.
So this is how you build up your mandala. And usually, trust me, we don't work like this. We work grid by grid. Okay? we just go slowly in circular motion, not like this, but it's time consuming. Mandalas are time consuming. So that's why I had to do this, so at least you can complete entire mandala. See, mostly I am using lines, so it is easier for those who are creating mandala first time. Those who knows better can change element, क्योंकि लाइन सबसे इजी है और इतने वेरिएशन आप लाइन से क्रिएट कर सकते हो, तो इसीलिए मैं लाइन इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि जो हमारे यास्मीन जैसे हैं आर्टिस्ट जिन्होंने कभी मंडला नहीं किया है उनके लिए आसानी हो जाए. ठीक है, चलिए. मंडला में ऐसा है कि आप जितना ऐड करना चाहो करते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है. यू हैव टू फाइंड द पॉइंट वेर यू से योरसेल्फ इट्स इनफ. आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां आप अपने आप को बोलो कि अब बस आगे नहीं बढ़ना है, वरना मंडला में कोई अंत नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ. और अब मुझे अपने आप को बोलना पड़ेगा कि इट्स इनफ, वरना ये मैं करती जाऊंगी. चलिए, तो इसी के साथ हमारा मंडला तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन हो गया है. तो बताइए, अच्छा लगा हमारा मंडला आपको? अगर कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए. मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय देती हूँ, मैं सेशन एंड करूँ इससे पहले. अगर कोई मंडला से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ पूछ लीजिए. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन anything related to mandala and mandala art if you are looking for something, so you can ask. Yes, Serene, you need lots of patience, but that's the thing, you are completely in a meditative state when you do mandala. At least I feel that way, because you are completely absorbed in all this pattern. And art does need where to get a grid. Yasmin, you have to prepare your grid yourself. I shared video already, because if you get grid, those grid you cannot erase. Then if you cannot erase those grid, then your mandala will be with grid. So you have to prepare this grid. Otherwise, if you go online and search, you might find printable grids, but then you cannot erase those grids if you print out. Yes, that's the fact. You can't print out grid like that. You know, the now challenge will be like, मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि पहचानना कि कौन सी लाइन कई पेन से की गई है to complete this entire mandala, because I have used so many different pen size. That's the reason. Yes, it will look definitely very beautiful, and if I sit down, I can complete this in 2 hours. This small mandala, okay? Because right now I have this entire thing ready. That's why I don't have to think much. Which one? This one?
Yeah, it's a good question. I didn't even think about it, but I hope we can complete it perfectly. Okay, wish me luck, but I think we can, because when I will complete this entire thing, then we will understand. But it's very difficult to tell right now. If we couldn't, then it's okay, it's a mistake, accept and move on. In life also we do so many mistakes. There are so many mistakes we cannot correct. So no regrets, accept it and move on. That's the way it is. So when next time you do that, you remember your mistakes. Correct? So mandala is actually representing your life, if you understand that way. That's why it's spiritual. That's why many religion use mandala. So mandala has that lesson to give away, that life is full of mistakes. Accept and move on. And remember not to repeat those mistakes. Okay? It's okay, Samina. I will upload this same video on YouTube, so you can watch there. No worries. Thank you everyone for joining this beautiful mandala session. And as I said, you can use different mediums to create this mandala, like felt pen, ball pen, gel pen, color pen, sketch pen, acrylic paints, gouache, watercolor. There are endless mediums and endless technique to mandala. You can use any of those and create this beautiful art piece, and you can decorate your house. I have been doing that since very long. I have created many mandalas and I am decorating my walls. And whenever you have friends and guests coming up, they always go and look those creations, and when you have done yourself, it's always appraisal. Yes, you should actually recommend your children. If you can do, you can draw simple shapes like round petals and leaves and give them as a coloring book and coloring paper. So it's a very good practice for them. You can ask them to identify shapes and they can actually create beautiful creation out of this. So do that with your children. Sit down with them, let them create something, you create something. It's like a bonding time with your children, your family, and I have done that a lot with my children. I will post this video on YouTube, my art channel, Art Passion. So this video will be uploaded there. Okay, so thank you everyone. With that, I take your leave, and I hope you all had fun creating mandala with me. Complete this mandala and do post on our Facebook page with all of us. If you are creating something different, I would really appreciate that also. So whatever you create, please share with us, all of us, so it could be inspiring for all of us. So thank you very much. Take care. Bye bye. See you everyone.